Most people don't have their own workout or training equipment at home, but I have a lot of experience in buying all these home training things like dumbbells, or I have even set up my own pull-up bar, come a punching bag holder which can be used for multi-purpose. I have experience in making my own training equipment. I have these exercise cycles. I train in cardio and things like that, which makes me kind of eligible to give some advice about all these things. I purchased these fancy workout ab rollout things. But what I brought home yesterday is one of the most effective, most challenging upper body exercise that I've ever done. Yes, the gymnastics ring. This can be set up at different heights according to your needs. You can do your chest and you can work on your fancy core exercises. The pull ups can be done. You can get fancy about it. Work on your shoulder mobility, the dips. Almost each, I can say, yes, it can be safely said that almost all muscles in the upper body can be trained with these two rings. And the best thing about it, it's cost effective. Very less price, you can train all muscles in the body. Compare this with any multi gym or pull up bar, it's less costly. और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको खेलने के लिए भी खिलौना हो गया. बीच में एक बार टच करो. कर दिया. लाइट कैसी? ठीक है, बढ़िया है, सुपर. अब शुरू हो जा. शुरू हो गया ना? हाँ. Welcome back. The gymnastic ring is one of the best thing you can purchase for yourself before this lockdown, before another lockdown. ओके इससे पहले कि फिर से बंद हो जाए और आपको बहाना मिल जाए कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, उससे पहले आप कुछ ना कुछ खरीद लीजिएगा इस तरीके से जिससे आपकी सारी चीजें हो जाए. व्हाई आई एम सेइंग दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन परचेज फॉर योरसेल्फ इज it can be done, it can be used for a wide variety of exercises. You can do a number of things, number of different types of things. You can do all those pulling exercises, you can do the dips, you can pull ups and body rolls, you can do everything. In short, it can be used for your whole upper body. Almost all muscles in your upper body, especially the core, will get engaged and you will have that abs of steel and finally become man of steel with these exercises. So बढ़िया है, आपका ऊपर बेल्ट से ऊपर सब कुछ हो जाएगा, उधर से नीचे का आप सुबह दौड़ लीजिएगा, उतना काफी. The one I got is fully made of iron, so it is metal. I'm sure this will not break or something like that. It has a leather grip also. और ये ऐसा रिंग सा है कील के साथ, जिससे आप कहीं भी इसको टांग सकते हैं या फिर किसी रस्सी से बांध सकते हैं. What I have done over here is I've used a rope. ये कुएं में डालने वाली रोप होती है. लिटरली मैंने ऊपर वाले कुआं को कैमरा घुमा के दिखाओ, वो कुएं की बाल्टी को पानी से निकाल के उसकी रस्सी को इस्तेमाल किया. ये वो रस्सी है. ओके सो ये ऊपर से आप बांध सकते हैं किसी भी जगह पे. इट कैन बी विंडो पेन, वो विंडो के ऊपर ऐसे ऐसे ग्रिल होती है, विंडो पे हो सकता है, किसी रेलिंग के ऊपर हो सकता है. पंखे से बांध दो, मेरा क्या जाएगा. एनीवे उसके बाद मैंने इसका एक लूप बनाया और लूप में डाला एक एस हुक. दिस इज कॉल्ड एज एन एस हुक इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो यू कैन डू दैट with a rope over here. You can fix it like this and this one goes over here. Now why I choose this is because over here I can do all the dips and things which come on the hip level, and if I just adjust a little, now this can be used for some pulling action as well as you can practice those transition moves also. Yes. Okay, I'll show you a difficult pull-up. That is my strength level. But when I just try to do something as simple as this, see how unstable I am. It means it is more challenging. It is challenging my core. If I can do that but still I can't do this, means I have to work more on this. So this will challenge you, and that is what is most important. Challenge yourself. Okay.
Here's a few examples of exercises that you can do with the rings. Number one, of course, set it up to a pull-up bar height and try some pull-ups. I know I'm cheating in these pull-ups, so we have to work on our stability. Keep our back straight. Try to go slow up, slow down. हौले हौले से नशा चढ़ता है, हौले हौले घूंघट उठता है, और पुल अप भी हौले हौले करना, उससे स्टेबिलिटी मिलेगी, कोर सही होगा. The next exercise that I found challenging is you do a pull-up एंड यू डोंट कम बैक. वहीं रह जाओ, आपकी धरती पे कोई ज़रूरत नहीं है. इसी एक्सरसाइज को थोड़ा फोटोशॉप से एडिट करके आप इसके साथ नी रेस भी लगा सकते हैं. यू डू अ पुल अप, यू डोंट कम बैक एंड यू डू नी रेस. दिस इज समथिंग वेरी चैलेंजिंग फॉर योर शोल्डर्स, फॉर योर आर्म्स एंड योर कोर, बिकॉज इट गेट्स ऑलमोस्ट डबल डिफिकल्ट. नी ज़्यादा रेस नाम नहीं पता था मुझे एक्सरसाइज का, इसलिए यू हैव टू जस्ट कंटिन्यू फ्रॉम अ नी रेज एंड गो अप टू ऑलमोस्ट अपसाइड डाउन पोस्चर, होल्ड ओवर देयर एंड कम डाउन स्लोली. रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट हौले हौले. अगली वाली में आपको पूरा बॉडी ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ये ऐसा एकदम से आपने वक्त बदलने, एकदम से आपने पैर ऊपर ले जाने और नीचे ले आने. यू हैव टू कम डाउन स्लो. सी, there is the challenge in this exercise. You have to go up, almost be in an upside down position and try to come down as slow as possible, keeping the legs straight. It is a challenge for your core, and that is why I said it is a very challenging exercise when you incorporate this in your workout, because you're working on your arm strength, core stability, all at the same time, right? Here I am using an assisted version of this exercise. That is, I am using the floor to push and kick and reach in that position. If you are very strong, you can do it without that also. The next exercise, I want you to place it somewhere near your waist. एकदम बेल्ट लेवल के इधर ऐसे लगाने के बाद just try to put some weight on it. हल्का हल्का, धीरे 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 धीरे. इससे I am using my foot also. देखिए जैसे मैं पैर भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सपोर्ट के लिए, थोड़ा थोड़ा सपोर्ट के लिए, और धीरे धीरे. If you look at my feet, I am slowly taking the weight off my feet, and this will heavily challenge your shoulders, your arms, your core, because you have to keep it stable. Otherwise, if I make my arms or core loose, you see what is happening? It will go like this. See, you see that shaking that will come because it is not stable. रस्सी है ना, वो तो हिलेगी. तो उसको सीधा रखने के लिए आपको tighten your core and निकल गया नहीं बचाओ. Tighten your core and all the muscles and try to keep your body like a straight line. Okay, so this is your most challenging exercise. Go. Stay here for some 10-15 seconds. Cholo. 5 seconds. In the next exercise, we'll try some push-ups. I want you to keep it somewhere in knee level. And nothing, you can try different variations of pull-up. Exercise number 1 would be straight, strict. So here 1, 2, 3, 4. You have to tighten your core, otherwise ये हिलता रहेगा. टाइट कीजिए और slowly कीजिए. Exercise number 2, join them both together. Open and join. Open and join. Open, close. Open, close. Open, close. Now exercise number 3, when you go down, open out. Be careful, open out, and you come in, close. So it is like open out like this, close. Open out like this, ooh, close. Open out, close. Open. Also, one more challenging thing you can do is just keep it over here, सीधा ही रहना चाहिए, and just try to stay in a push-up position. Maintain that shoulder to arm as a straight line and just stay over there. It is hard. Okay, you have to tighten your core and stay over there. Just try staying there at 10-15 seconds like this. और ये ऐसा आप लगा के लेट सकते हैं किसी दीवार पे या विंडो पे, और पैर का भी सपोर्ट लेने के बाद just be on your heels and just lift up your back and your hips so that you are in a body row position, right? Now this exercise can be done in this grip and this grip.
Okay, your hand positioning can be like this or like this. And when you come up here, see this and this and this, all three target different muscle groups in your back. So आपका बैक का वर्कआउट हो रहा है यहाँ पे. बहुत आसानी से हम कर सकते हैं. हिप ऊपर एंड गो, ये साइड. इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिम्मत नहीं हो रही थी इसलिए, यू लाइक दिस वीडियो यहीं से कर लेते हैं. सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन. बाकी आप प्रोसीजर जानते हो यहाँ का, इस चैनल का सरकारी दफ्तर है ये. ओके, सो कराटे टीवी ऑनलाइन क्लास, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. क्लिक लिंक इन डिस्क्रिप्शन. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. इफ यू लाइक दिस कलरी धोती, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. यू कैन ऑर्डर ऑनलाइन. नया चैनल है कराटे टीवी वाले भैया, यू कैन सब्सक्राइब टू दैट चैनल ऑल्सो. एंड शुक्रिया.